Hello and welcome to News9 Live, our top story at this hour. After Bharat Nyay Yatra, Rahul Gandhi and the Congress are now gearing up for the Bharat Nyay Yatra. The Yatra will commence from Manipur and end in Mumbai. It shall begin from 14th of January and shall traverse 6,200 kilometers covering 14 states, most of them in the Hindi heartland. The Yatra is expected to culminate in Mumbai by the 20th of March, just ahead of the 2024 polls. All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyay Yatra, January 14th to March 20th, from Manipur to Mumbai. We had done a Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra in Indian political history. Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people. This is not a political yatra. Don't think that it isn't. We are not going to make it as a big political yatra. Already Jairamji mentioned about the issues. We are going to raise these issues of the common people of this country. It will interact with the people, those who are suffering. That's only. We are not going to make it as a political yatra, election yatra. Nothing is there. We will find out the yatra where we didn't went last time. We will find out the route like that. We will give the details in. Whether Mr. Rahul Gandhi wants to undertake a yatra or not undertake a yatra, that is his democratic call. It is for the Congress party to decide. The date of 15th January or around it perhaps may be suiting the fact that Mr. Rahul Gandhi might be on one of his international travels or on vacation, and after that wants to make his presence felt. But the fact of the matter, what is Nyay? In this country, Nyay or justice has been happening after 80 crore people have been getting ration from Prime Minister Modi's government for the last so many years. People in India under Prime Minister Modi's government are reaping the benefits of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. They are seeing how India has become one of the fastest growing economies in the world, moved from number 10 to number 5. Seeing that in this country its prestige has gone up, delivery is reaching there, infrastructure is increasing. This is all justice, not the empty slogans from Garibi Hatao from the days of Mrs. Indira Gandhi to the Bharat Jodo, which has been rejected of Mr. Rahul Gandhi by the people of India, and now coining another word like Nyay. Nyay is what you do, not what you create as a slogan. And I'm sure the people of the country will also give a reply to the Congress party and its leadership on these theatrics that they often resort to. Criticizing India, which Rahul Gandhi ji regularly does, perhaps on his advice, is also seen by the people of India. Mr. Rahul Gandhi going abroad and asking for foreigners to interfere in India's democracy has also been seen by it. And most importantly, Mr. Sam Pitroda, if my memory is correct, is the person who on the 1984 by-election said, so what? So this is the sum and substance of Mr. Rahul Gandhi and his core advisors. And the people of India see all of it and have consistently given their stamp of disapproval against the Congress party, its advisors and its leadership. सैम पिट्रोडा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन और इंटेलिजेंस केवल कुछ ही लोग जो उनके परिवार के दरबारी है वही समझ पा रहे हैं। देश की जनता का ये ओपिनियन राहुल गांधी के विषय में नहीं है और बार बार राहुल गांधी इसका प्रमाण भी तो देते हैं। भाई पूछ लीजिए, जब वो वीर सावरकर जी को कायर और डरपोक कहते हैं तो क्या उन्हीं के साथी उद्धव सेना के लोग उनको स्वीकारते हैं क्या? उनसे पूछ लीजिए, जब वो ओबीसी समाज का अपमान करते हैं जिसके लिए वो कन्विक्ट हो जाते हैं, तो क्या अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी उनकी बातों को समझ पाते हैं क्या? और जब राहुल गांधी पार्लियामेंट की स्टेयर्स पर खड़े होकर देश के प्रथम
ओबीसी उपराष्ट्रपति जो किसान पुत्र जाट समाज से आते हैं, जगदीप धनखड़ जी, उनका मखौल बॉडी शेमिंग, पोस्टर शेमिंग करने वाला वीडियो बनाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो क्या उसको लोग समझ पाते हैं क्या? तो राहुल गांधी की तथाकथित परिपक्वता और तथाकथित इंटेलिजेंस, आलू से सोना से लेकर उनके अलग अलग प्रकार के जो बयान हैं, ये केवल कांग्रेस के प्रथम परिवार के दरबारी ही समझ पाते हैं। जनता तो समझने से रही, इसीलिए 2004 से लेकर अब 2023 आ गए, बार बार जनता चुनाव के माध्यम से उनको संदेशा भी देती है, पर ये प्रथम परिवार के चाटुकार नहीं समझ पाते। Speaking of Rahul Gandhi, he arrived at Virendra Arya Akhada in Haryana's Chhara village, where he interacted with wrestlers at the Akhada. Those are the visuals of the Akhada, and you can see Rahul Gandhi there watching the wrestlers perform their several tricks. Chhara, of course, is the hometown of wrestler Deepak Punia, and both Deepak and Bajrang Punia commenced their respective wrestling journeys at Virendra Akhada. Bajrang Punia said that Rahul Gandhi observed and took quite an interest in the wrestling routine, actively participating in the activities as well. वो हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाए थे उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने, रोड किए, एक्सरसाइज की। बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। Rahul Gandhi's visit comes amid a fresh row over the Wrestling Foundation of India. The Sports Ministry suspended the WFI after WFI's new president, Sanjay Singh, announced the hosting of the U15 and U20 nationals by the end of this year. Wrestlers who accused former WFI president Brij Bhushan Sharan Singh of sexual harassment were discontented with the election of Sanjay Singh, as he is closely associated with Brij Bhushan. Staying on wrestling, amid the WFI pole row, World Championship medalist Vinesh Fogart said she is now returning her Khel Ratna and Arjuna award to the government, protesting against the election of Sanjay Singh as the Wrestling Federation of India president. Sanjay Singh is a Brij Bhushan Sharan Singh loyalist, and Vinesh shared her decision to Prime Minister Narendra Modi in a letter. Vinesh's decision comes days after Olympic medalist Bajrang Punia and Defi Olympics champion Virendra Singh Yadav returned their respective Padma Shri awards as well. Moving on, ahead of Defence Minister Rajnath Singh's visit to Rajouri and Poonch in Jammu, security forces detected and destroyed an improvised explosive device at Lawapora on the Srinagar-Baramulla highway. The bomb disposal squad was quickly pressed in and the device was defused in time. Traffic movement on the Srinagar-Baramulla National Highway came to a halt briefly as security forces conducted the operation. The Defence Minister shall review security in the state following the recent terror attack in Rajouri, resulting in the death of 4 soldiers. He shall hold meetings with top security officials to discuss the measures being taken to address the situation. Now, Defence Minister Rajnath Singh's visit to Jammu and Kashmir comes in the wake of Chief of Army Staff General Manoj Pandey's review of the security preparedness in the state on Monday. A major anti-terror operation continues in Rajouri-Poonch sectors. Additional troops have been deployed in the region to strengthen the counter-terror grid. In the Israeli embassy
bomb blast case, the NIA team reached the spot and has begun with its investigation at the blast site. Meanwhile, suspecting possible terror attack, the Israeli National Security Council has also issued a travel advisory for Israelis in India, especially the national capital. Israeli embassy officials said that there was a blast near the embassy building in Delhi on Tuesday evening. Israeli Foreign Minister spokesperson Leo had said that the explosion occurred about 100 meters away from the embassy building located in the Chanakyapuri area. As per the Israeli embassy, there were no casualties and all the envoys and workers were unharmed. This evening, several minutes after 5, an explosion occurred in close proximity to the embassy. All our workers are safe, all our diplomats are safe. Our security teams are working in full cooperation with the local Delhi security, and they will investigate the matter further. Now, the Delhi police was informed about a blast at around 6 p.m. and a team from the fire brigade also rushed to the spot. The Delhi police, however, was unable to find any explosive device around the area where the blast was reported to have happened. More than 12 teams of Delhi police are engaged in the ongoing investigation. Suspicious vehicles within several kilometers of the embassy area are being investigated through CCTV, and 2 suspects have also been identified. The search for other suspects is going on. All international flights and details of passengers were thoroughly checked and only allowed to take off later. It was later reported that the police found a threatening and abusive letter addressed to the Israel ambassador near the embassy. Delhi police's dog squads, crime and BDS team reached the spot where the alleged sound of the explosion was reported to have been heard. Soon, experts from the forensics team also reached the area to conduct a thorough search. The following content may contain visuals that are disturbing, graphic, or sensitive in nature. Viewer discretion is advised. This material is intended for mature audiences and may not be suitable for all viewers. Please exercise caution while watching, and if you find such content distressing, we recommend discontinuing viewing. This disclaimer is provided to ensure awareness and to prioritize viewer well-being. It's been 82 days since Hamas's first attack on Israel. Since then, nearly 20,000 Gazans have lost their lives in the conflict between Israel and Hamas. Let's get you all the latest updates from the war zone right now on your screen. Israel's war on Hamas will last months, says Israel's military chief. Israel fighting a 7-front war, according to the Israeli defense minister. Differences persist, but US and Israel on the same side in the war, says an Israeli official. Qatar's Emir and Biden discussed joint mediation for Gaza ceasefire, according to reports. Hamas and Palestinian Islamic Jihad reject Egypt's plan to end war, according to Reuters. IDF continues intense fighting in Gaza, according to Hamas-controlled health ministry. 241 people killed in 24 hours as Israeli strikes continue, according to health ministry of Gaza. Defense Minister of Israel Yoav Gallant hinted on Tuesday that the country had retaliated in Iraq, Yemen and Iran for attacks carried out against it. Gallant told the lawmakers that Israel is in a multifaceted war and is coming under attack from 7 theaters, those being Gaza, Lebanon, Syria, Judea and Samaria in the West Bank, Iraq, Yemen and Iran. אנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית. אנחנו מותקפים מ7 גזרות שונות. עזה, לבנון, סוריה, יהודה ושומרון, עיראק, תימן ואיראן. אנחנו הגבנו ופעלנו כבר ב6 מתוך הגזרות האלה, ואני אומר כאן
בצורה המפורשת ביותר. כל מי שפועל נגדנו הוא מטרה פוטנציאלית, אין חסינות לאף אחד. Since the Hamas attack on southern Israel on 7th of October, the IDF has said it also retaliated for knock-on attacks from Lebanon and Syria and carried out raids on Palestinian terrorists in the occupied West Bank. The IDF uploaded a video on social media on Tuesday claiming to show weapons being found under a blanket in a child's bedroom in the northern Gaza neighborhood of Tufah. Israel has vowed to destroy Hamas despite global calls for a ceasefire in the 11-week-old war amid concerns that the conflict could spread with US and Iran aligned forces attacking each other elsewhere in the region. In the midst of a war, as the war rages on in Gaza and drone and missile strikes disrupt maritime traffic in the Red Sea, Prime Minister Narendra Modi spoke to Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman. The two leaders agreed to work together for peace, security and stability in the West Asia region. Following their telephonic conversation, the Prime Minister said he held a good conversation with HRH, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, on the future of strategic partnership between India and Saudi Arabia. He also said that he exchanged views on the West Asia situation and shared concerns regarding terrorism, violence and the loss of civilian lives. Time for a break now, but I'm coming right back with lots more. Don't go away. Stay with us. जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा सलमान खान का करेंगे मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा This is someone who is sitting inside our jails and is still very obviously and openly running and possibly the largest organized criminal operation in the country. Student organization of Punjab University में सोपू का acting president type भी रहा है. He was a troublemaker, getting into fights with people, not coming to the class. As on date, it appears that Lawrence gang is the most important, the prominent gang. Gangs here in Punjab, they are intimidated. Today he is India's most dangerous gangster, and India's presence are apparently no bar to how Bishnoi runs India's largest criminal empire. News is now content. Just stream it. Download the world's first news OTT, News9 Plus, ahead of the curve. Welcome back, and news coming in from Tamil Nadu. A gas leak from a fertilizer manufacturing facility in Ennore in Tamil Nadu has led to the hospitalization of at least 30 individuals. A pressure drop in the pipeline around 11:45 p.m. resulted in a pungent odor and gas bubbles were observed in the pipeline. The unit promptly depressurized the pipeline, diverting ammonia vapor to the flare, completing the operation in 20 minutes according to Environment Secretary Supriya Sahu. Following the incident, the Minister of Environment and Climate Change of Tamil Nadu announced the closure of Coromandel International Limited's industry until further orders. The industry specializes in the production of ammonium phosphate potash sulfate. However, residents in the surrounding areas reported vomiting and nausea-like feelings shortly after the incident. 16 ambulances were dispatched, transferring injured individuals to Stanley Medical College Hospital. Meanwhile, following the incident, many people took to the streets and launched a protest demanding strict action against the people and the company responsible for the incident. Let's now bring you up to speed on the COVID situation in the country. The country is seeing an increase of COVID-19 cases in several states. The number of active cases now stands at 4,093.
In the last 24 hours, 2 deaths have been reported from Karnataka and 1 from Gujarat. 412 fresh COVID cases were reported in the last one day. The number of cases of JN.1 variant has risen to 69 in the country. Karnataka has reported 34 cases of JN.1 variant. Several states are also taking guard in view of the spread of the new subvariant JN.1. Though it is not causing severe infections as yet or even hospitalizations, those with comorbidities are particularly vulnerable. The World Health Organization has classified JN.1 as a variant of interest and asked Southeast Asian countries to scale up surveillance and take protective measures. External Affairs Minister S. Jaishankar is on a visit to Russia. The Indian Foreign Minister will discuss. While there have been ups and downs in relationships between all countries, the only constant in global politics has been the ties between India and Russia. But almost all these relationships have their ups and downs. So if you look at Russia and China, Russia and USA, Russia and Europe, India and China, India and USA, you will actually see over a period of time, there are good periods, there are sometimes not so good periods, there are difficulties, there are stresses, and there are very also good memories and great achievements. To me, what is actually exceptional about India-Russia relations is from the early 50s, it actually for 70, 80 odd years, and there have been big changes in this period. You know, this was a period when actually the Soviet Union became Russian Federation, among other countries. When actually big changes have happened in world politics, when Russia has actually transformed, India has grown. And yet, if there is one constant actually in world politics, it has actually been the relationship with India-Russia. So everywhere else, actually, you get the question when you look at any relationship, why has this relationship changed? I think we are the only two countries which have to answer why has this relationship not changed. And I can think of many reasons. One, of course, that if you look at the map of the world, if you look at the continental mass, it is natural as two big countries of the central landmass in the world, India and Russia, have many things which bring them together. Ayodhya sparkles in vibrant hues, gearing up for the grand Pran Pratishtha ceremony on 22nd of January. The countdown to the inauguration of the Ram Temple and the consecration ceremony is reaching its peak, with preparations in full swing and entering the final stages. Prime Minister Modi is all set to visit Ayodhya on 30th of December, where he shall unveil the new airport and railway station along with conducting a road show. Ahead of the ceremony, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister K.P. Maurya is inspecting the ongoing works to revamp Ayodhya railway station ahead of its inauguration. Watchmaker Anil Kumar Sahu dedicated a world clock to Ram Lalla, which shows time of 9 different countries. With the Ram Temple construction nearing completion, a surge of visitors and devotees is being witnessed in Ayodhya, eager to partake in the spectacular
Pran Pratishtha ceremony. Meanwhile, marble sourced from Mandla in Madhya Pradesh are also being supplied to Ayodhya for the construction of the temple. मंदिर में जो गर्भगृह है वहाँ पे जो उसको मकराना वाइट के साथ अपने क्षेत्र का पत्थर लगाया जा रहा है, ये बहुत ही मतलब हम लोगों की गौरव की बात है, पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। देखिए ये जो पत्थर हैं अपने यहाँ के गोंडवाना बेल्ट की जो चट्टानें हैं, ये आग्नेय चट्टानें हैं, इनकी हार्डनेस बहुत होती है पहली चीज। दूसरा इसमें क्या है कि चूंकि जो वोल्केनिक रीजन रहे, बहुत सारे ज्वालामुखी ये सारी चीजें रही यहाँ पे, तो अलग अलग मेटल्स और अलग अलग मिनरल्स वो इनके अंदर मेटामॉर्फस रॉक्स के अंदर आ गए, तो उसके कारण इसमें कलर बहुत अच्छे से खूबसूरत कलर मतलब मेटल्स के कारण आए। हाँ, भगवा कलर भी आया और ग्रीन भी आया, एक गोल्डन कलर भी आया, ये मेटल्स के कलर हैं, तो उससे हार्डनेस भी इसकी काफ़ी हो गई। दूसरा पॉलिश पकड़ने की क्षमता इस पत्थर की जो है ये सबसे अच्छी है। मतलब यदि किसी स्टोन की आप क्वालिटी पे जाते हैं तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि इसकी हार्डनेस क्या है, डेंसिटी क्या है। सेकंड नंबर पर ये देखते हैं कि इसकी पॉलिश पकड़ने की क्षमता कितनी है, ये कितना पॉलिश पकड़ सकता है। फिर ये देखा जाता है इसके ग्रेन साइज कैसे, जितने सूक्ष्म अगर ग्रेन होंगे उतना अच्छा इसके अंदर कार्विंग हो सकती है, मूर्ति बन सकती है, मतलब मल्टीपर्पज हो जाता है। In the midst of the rising cold, Lord Ram Lalla is enveloped in warmth adorned with a Jaipuri quilt, which is made of velvet and surrounded by a blower circulating warm air. Time for a break in this bulletin, but I'm coming right back with lots more. Stay with us. तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। This is someone who is sitting inside our jails and is still very obviously and openly running and possibly the largest organized criminal operation in the country. स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में सोपू का एक्टिंग प्रेसिडेंट टाइप भी रहा है। He was a troublemaker, getting into fights with people, not coming to the class. As on date, it appears that Lawrence gang is the most important, the prominent gang. Gangs here in Punjab, they are intimidated. Today he is India's most dangerous gangster, and India's presence are apparently no bar to how Bishnoi runs India's largest criminal empire. News is now content. Just stream it. Download the world's first news OTT, News9 Plus, ahead of the curve. Bangalore traffic is an example of something that has gone wrong with our system. We have more than 50 flyovers in Bangalore city. If flyover is a solution to traffic problem, Bangalore should not have traffic problem. According to TomTom Traffic Index 2022, Bangalore is ranked as the second worst city in the world when it comes to traffic. The speed limit at the ORR is 80 kilometers per hour, but our vehicle has only moved 10 kilometers per hour. What Bangalore needs is a surgery, but what we have been offered repeatedly are band-aids. Only on the world's first news OTT, News9 Plus, ahead of the curve. Since the last 2 years, Khalistani terror groups are threatening Indian diplomats in Canada, US, UK and Australia.
Investigations of these threats led us to the first ever abduction and killing of an Indian diplomat, Ravindra Matre, in UK's Birmingham in 1984. Our months-long investigation finally led us to the murderer of Ravindra Matre, who has been hiding in Pakistan-occupied Kashmir for the last 40 years. Watch our exclusive documentary, Murder of an Indian Diplomat, where we reveal the man who killed Ravindra Matre. Stop searching, start streaming. Download the world's first news OTT, News9 Plus, ahead of the curve. Welcome back. Decision on the main idol for the Ram temple will be made on the 29th of December. 3 idols are in the running for the selection. The idols are being constructed amidst tight security and in several locations, one in Karsevakpuram, second one in Ramsevakpuram, and the third one in Vivek Srishti. Getting some breaking news. Prime Minister Narendra Modi is right now interacting with beneficiaries of Viksit Bharat Sankalp Yatra. The event aims to foster a direct connection between Prime Minister and those who have benefited from the Yatra, a journey undertaken to ensure the widespread success of government flagship schemes. मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस चरण में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आप दिन रात केवल एक ही लक्ष्य लेकर अथक परिश्रम करते हैं, जो है देश के नागरिकों का कल्याण। प्रधान सेवक के रूप में हमने देखा है कि आप तब ही संतुष्ट होते हैं जब सरकारी योजनाओं का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब देशवासी आपके संकल्प के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आपने विकसित भारत बनाने का आह्वान किया था। इस संकल्प को 2047 तक पूरा करने के लिए आपने 25 साल का अमृत काल का विजन तैयार किया, ताकि देश के हर गरीब को अपना अधिकार मिले, हर किसान समृद्ध हो, हर महिला सशक्त हो, युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिले। पिछले 9.5 साल में अपने देश के लिए कई योजनाएं चलाई। इन योजनाओं से देश के युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को लाभ मिला। हर योजना का प्रभावी ढंग से अमलीकरण हो और विकसित भारत की कल्पना साकार हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया था। यात्रा का प्रारंभ होने के बाद आपके प्रति विश्वास और श्रद्धा के कारण लोग इस यात्रा में चल रही गाड़ी को मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में देखने लगे। पहले हफ्ते में जहां हर पंचायत में औसतन 300 से 400 लोग एकत्रित होते थे, वहीं अब हर पंचायत में 650 से 700 लोग शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि आपकी गारंटी पर जनता का कितना भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से
अब यह यात्रा शहरी क्षेत्रों में भी चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आपके परिवारजन शामिल होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प ले रहे हैं। 1960 के दशक में भारत ने कृषि क्रांति का एक दौर देखा। इसमें हमारी कृषि ने बैलगाड़ी से ट्रैक्टर तक का सफर तय किया। देश के किसानों ने हाइब्रिड बीज और केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग शुरू किया। भारत के इतिहास में इसे हरित क्रांति के तौर पर दर्ज किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश को तीसरी कृषि क्रांति की ओर आगे बढ़ाया है। इस यात्रा में कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग और आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे उर्वरक का आविष्कार देश को तीसरी कृषि क्रांति की ओर आगे बढ़ा रहा है। इस नई कृषि क्रांति में आपने महिलाओं को भी उचित हिस्सेदारी तय करते हुए नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ खुद किया। आज हम महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं, उन्हें ड्रोन उड़ाते हुए देखते हैं, तब हमारे अंदर से यह आवाज़ आती है, नमो ड्रोन दीदी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई जगह जाने का अवसर मिला है। महिलाएं, युवा, किसान और गरीब बहु उम्मीद से यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें पिछले 9.5 सालों में कोई न कोई लाभ मिला हो। ऐसे लोग मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। जब हम ये सुनते हैं तो हमें गौरव महसूस होता है कि मोदी सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में कैसा बदलाव लाती है। लोग गदगद होकर यह बताते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे बची, उनके जीवन में कैसे बदलाव आया या उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनी। कई जगह पर हमें ये भी देखा कि विविध योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ मिला हो। कई गरीब परिवार के व्यक्ति की आयुष्मान भारत योजना की वजह से जान बची हो। ऐसे लोग सिर्फ अकेले नहीं आते हैं प्रधानमंत्री जी, वे आपके प्रति अपना कर्तव्य भाव व्यक्त करने के लिए दूसरे लोगों को भी साथ लेकर आते हैं। मुझे यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि मोदी की गारंटी की गाड़ी 6 सप्ताह के भीतर लगभग 1.25 लाख ग्राम पंचायत तक पहुंच गई हैं, जिसमें 5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी हुई है। यात्रा के दौरान लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में 1.25 करोड़ लोगों की जांच की गई है। टीबी मुक्त भारत के लिए 17 लाख लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई है। लगभग 45,000 लोगों ने निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। 15 लाख लोग सिकल सेल की जांच से लाभान्वित हुए हैं। इस यात्रा में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाकर 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। 3 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए 7 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस यात्रा में अब तक आपके 4 करोड़ से अधिक परिवारजनों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। 21 लाख से अधिक लोगों ने माय भारत वॉलंटियर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये सभी समाज के साथ मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा राष्ट्र विकास में जमीनी स्तर के लोगों के योगदान को सराहा है। आपने पद्म सम्मान ऐसे जमीन से जुड़े लोगों को दिया जिससे जमीनी स्तर पर लोगों का देश के लिए कुछ करने का हौसला बढ़े। यात्रा के दौरान अब तक 16 लाख से अधिक महिलाओं, 13 लाख से अधिक छात्रों, 4 लाख स्थानीय खिलाड़ियों और 2.5 लाख से अधिक स्थानीय कलाकारों के योगदान को पुरस्कारों और प्रशस्ति पत्रों के माध्यम से सम्मानित किया गया। अंत में
एक बार फिर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब तक यात्रा के अनुभव पर आधारित आइए एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। एक 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य क्या होता है? सबका प्रयास जुड़ जाए तो क्या हासिल किया जा सकता है? आज इसकी मिसाल बनकर उभरी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। बीते 10 सालों में देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मेहनत की पराकाष्ठा करते देखा है। देश के लिए, लोगों के लिए खुद को बिना थके, बिना रुके, दिन रात खपाते देखा है। और तभी तो मोदी सरकार पर जन जन के अटूट विश्वास के कारण विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को लोगों ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का नाम दिया है। हर गांव में, हर शहर में इस यात्रा को लेकर उमंग और उत्साह का माहौल है। आज यह यात्रा जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली। एक सवा महीने के अंदर ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी करोड़ों लोगों तक पहुंची है। वेलफेयर स्कीम से अनेक पात्र लाभार्थियों को जोड़ा है। यही तो है नया भारत, जहां सेवा और सुशासन की भावना के साथ मोदी सरकार खुद लोगों तक, उनके दरवाजे तक पहुंच रही है और योजनाओं के 100% कवरेज की गारंटी के साथ पहुंच रही है। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरा होने की भी गारंटी, क्योंकि देश ने देखा है कि कैसे देश में 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज मिल रहा है। कैसे केवल 10 सालों में 4 करोड़ पक्के घर बने। कैसे 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन से महिलाओं की रसोई और जीवन दोनों धुआं मुक्त हुए। 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की कैसे गारंटी मिली। 13 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन ने कैसे जीवन भी आसान किया और लाखों जिंदगियां भी बचाई। कैसे 11 करोड़ 80 लाख किसानों को 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की किसान सम्मान निधि मिली। 50 करोड़ से अधिक जनधन खातों ने कैसे गरीबों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। कैसे 11 करोड़ शौचालय से देश ने ओडिया फ्री के संकल्प को सिद्ध किया। कैसे 10,000 जन औषधि केंद्रों ने सस्ती और अच्छी दवाई उपलब्ध कराकर जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचाए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के गरीब कल्याण की नीतियों ने 13.5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यानी मोदी सरकार की गारंटी का मतलब है विकास की गारंटी, लोक कल्याण की गारंटी, विकसित भारत के संकल्प के सिद्ध होने की गारंटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव से गरीब व्यक्ति तक, शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के लाभ तेजी से पहुंच रहे हैं। हमें इस सरकार का बहुत फायदा हुआ। हमको 1.5 लाख रुपया मकानों का दिया और गैस कनेक्शन दिया
और हमें बाथरूम दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार का, धन्यवाद। पीएम मोदी जी को हम थैंक यू या धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये उज्ज्वला स्कीम के कारण हम सब घर पे गैस पे खाना बनाना सकते। हमारे गांव में पीने के पानी को हर घर पहुंचाया जा रहा है। पूरे गांव को अच्छा और साफ सुथरा पानी मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। हकदारों को हक दिलाने की गारंटी के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित प्रयास करती रहेगी। जय हिंद। देश भर से आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े 5 लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले त्रिपुरा के पूर्व बामुतिया चलते हैं, जहां अर्जुन सिंह सोनर जी मौजूद है। नमस्कार सर। अर्जुन सिंह जी नमस्ते। हाँ, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर। आप कैसे हैं? हम आप बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। अच्छा, जरा अपने बारे में बताइए। हाँ सर, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से सर घर मिला है, और सर हमको उज्ज्वला योजना गैस मिला है सर, और टॉयलेट मिला है। नहीं, आपको लाभ मिला है। पहले जरा अपने बारे में तो बताइए अर्जुन जी। हाँ सर, मैं तो आप बहुत खुश हूँ सर। आपका साथ आज बात करने के लिए जो मौका मिला है, आप सर मेरे भगवान है। आप करते क्या हैं अर्जुन जी, करते क्या हैं आप? मैं सर चाय बागान में सर काम करता हूँ सर। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप योजनाओं के संबंध में क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैं तो पहला मेरा घर मिट्टी का था सर। मेरे पिताजी माताजी और मेरे बीबी बच्चे लेके सर उधर ही गुजरता। तो आप मेरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है सर, इसी घर बना के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बीबी बच्चे लेके मैं बहुत खुश हूँ सर। कैसा बना है घर आपका? मैं सर घर सरकारी योजना से सर हमको 1,30,000 मिला है, और हमारा हाथ से थोड़ा बहुत कर्जा बैंक से लोन लेके सर बनाया सर। तो अच्छा बना है घर? हाँ सर, खूब अच्छा बनाया, और इसी घर से हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं सर। इसीलिए अच्छा, अब पक्का घर मिल गया। पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। अच्छा अर्जुन जी, आप इतने खुश है, आपके यहाँ जो मोदी की गारंटी की गाड़ी आई है, उसका स्वागत करने में उसका पता कब चला? गांव के लोगों को इसमें कैसे रुचि बनी? अगल बगल के गांवों में भी पता है क्या कि ऐसी मोदी की गाड़ी आ रही है? हाँ सर, जो हम लोग का जो आपका मोदी का गारंटी गाड़ी जा रहा है सर, हमारा पूरा गांव का सब आदमी लेके उधर वो गाड़ी का सामने जाके गारंटी के बारे में सबको बताते हैं सर, ये मोदी गारंटी ये सही है सर। नहीं, इसका स्वागत कैसे किया आपने? हाँ, सब आदमी हमारा गांव का जितने पड़ोसी आदमी है सबको लेके सर हम लोग को गाड़ी का सामने आके आपको बारे में सर स्वागत किया है सर। अच्छा अर्जुन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। तो मुझे अच्छा लगा। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश के देवास चलते हैं, जहां से रुबीना खान जी जुड़ी हैं। रुबीना जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। आदरणीय माननीय सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को, और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने दीदी समूह?
दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप ये 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में हैं एक। अच्छा रुबीना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया हमारे समूह से ही, मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई, और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी, और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज़्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफ़ी बढ़ गया, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके नहीं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर, और उसको फिर मैं लेके न गाँव बेचने जाती थी, तो मेरा और भी आय बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने देवास में दुकान ले ली, क्या दुकान खोल ली मैंने कपड़े की, और उसके बाद में फिर मुझे जिले से इसका गणवेश का भी काम मिला, तो मैंने गणवेश भी सिलाई करी, और फिर हमें उपार्जन का भी काम मिला, हमने उपार्जन का भी काम करा, उससे मेरी आय अच्छी बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर अचानक कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि अपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों उन्होंने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में है, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए, सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया, और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदी उनको एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी, उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। कितनी कमाई हुई होगी रुबीना जी? सर मेरे दीदियों ने एक दीदी ने 60-70 हज़ार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए। मैंने 60-70 हज़ार रुपये? जी सर। हाँ, अच्छा रुबीना जी, आपने तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरपी रूप में भी काम किया है, उसमें आपके अनुभव क्या है? जी सर, मैं गाँव जागरने लगी। पहले गांव में जाके दीदियों को जागरूक करने लगी, और दीदियों को समझाने लगी कि भाई जो अपन समूह से जुड़ेंगे तो अपन को अपनी सरकारी योजना उनका भी फायदा मिलेगा। पहले क्या है कि दीदियों को कुछ योजनाओं का फायदा नहीं पता था, मगर जब हम समूह से आजीविका मिशन से जुड़े तो हमें समूह का और आज जो सरकारी योजना उन चल रही हैं उनका हमें पता चला, और उसका हम फायदा दीदियों लेने लगी। तो कुछ तो दीदियाँ ऐसे भी समूह बनाए कि भाई हमें सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, इसलिए मैंने समूह बनाए। हमारे संकुल संगठन में 40 गांव हैं, 40 गांव में ही हमने जा के समूह बनाए सर, और दीदियों को जागरूक करा। रुबीना जी, आपको शायद पता होगा, मेरा एक सपना है, उस सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करोगी? बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे कि हम हमारे देश को एक आत्मविश्वास, बहुत अच्छा वो बनाए देश। नहीं, लेकिन फिर काम बहुत करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर देश बनाए सर, और जैसे हम आत्मनिर्भर बने हैं ऐसे ही हमारा देश पूरा, सारी दीदियों अपने आप में आत्मनिर्भर बने, और पूरा मेरा देश आत्मनिर्भर बने। Currently, the industry is facing a lot of challenges as far as demand is concerned. Basically, that US markets has